आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल्स के और मेथड्स के नेचर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि जब हम बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी मेथड को एक्सेस करते हैं या वेरिएबल को एक्सेस करा है अभी तक हमने पाइथन में आपने देखा होगा, चाहे वो चाइल्ड क्लास हो या ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू, वो पब्लिक नेचर के थ्रू एक्सेस हो रहे हैं। मतलब देयर इज़ नॉट अ स्पेसिफिक वर्ड लाइक द एक्सेस स्पेसिफायर इन द पाइथन। लेकिन कहीं न कहीं उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से हम क्लास में एट्रिब्यूट्स को प्राइवेट बना सकें या किस किस लेवल पे हम उसको प्रोटेक्टेड बोल सकते हैं या किस तरीके से हमारा एट्रीब्यूट या मेथड जो है हमारी पब्लिक है ना? सो हाउ टू डू ऑल दीज़ थिंग्स इन द पाइथन लेट मी सी विद द एग्जांपल। मैं एक क्लास डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर क्लास ए है, ठीक है? अब इस क्लास ए में आई विल ट्राई टू हैव ऑल काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स फर्स्ट। So suppose x is equal to 10. This is what the attribute, and I will say this is nothing. It's a static variable. Finding one constructor underscore underscore init underscore underscore should be self of नहीं होना चाहिए। मैं जब इसमें एक वेरिएबल लेता हूँ self dot y is equal to 30. So when you see this nature of the variable, this nature is nothing. It's public way. Similarly, if I am writing another variable that is a self dot underscore underscore y that is having a nature as, just a minute, it should be underscore only, underscore y, instead of y I should say z is there, is equal to 40. The way to have protected variable. Now finally I write self dot x, but that x should be the with two underscores here, that is equal to 50. So this is what the thing by which making private variable. अब देखिए पब्लिक मतलब इट इज एक्सेसिबल एवरीवेयर, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द प्रोटेक्टेड का नेचर क्या होता है कि ये केवल चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो सकता है। प्राइवेट का मतलब क्या है, ये विद इन द क्लास हो सकता है ना, जो हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं उसके अकॉर्डिंग। बट इन अ पाइथन दिस प्रोटेक्टेड वे इज नथिंग, है ना। फॉर दिस वेरिएबल वी विल बी एबल टू एक्सेस बाय द ऑब्जेक्ट रेफरेंस ओनली। सो वी विल सी विद द एग्जांपल हियर, and this variable is the private variable. So this should be available only inside the class. But all these are concepts that is supported by the Python in terms of the underscore, double underscore, prefix के साथ आपके variables के name दिए हैं या method के name दिए हैं आपको। तो उन्होंने कोशिश की है, but we will see in this video itself how to access all these data. If it is private, but we will try to access all these data with the help of some methods that we will discuss. So let I define one method. Suppose this method is again the private method and I am calling self. Here simply print trying to be private. That I am writing here. Why I am writing here? Here, suppose I am creating one object for the class A. When I'm creating the object for the class A, and when I access A dot, let I print A dot y. When you run this code, can you see the output that is a 30. Similarly, when I do A dot, similarly print A dot underscore z. When I run this code, so can you see the output is 40 here? But if it's a protected, then there should be some restrictions. So this is the simply symbolic nature here. It's not actually implemented
एट दैट लेवल इन द पाइथन वर्चुअल मशीन, ये केवल एक तरीका है जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि हम प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट नाउ लेट बी सी विथ प्रिंट ए डॉट underscore x. When I run this code, so can you see the attribute error is there? That object, a object has no attribute underscore x. So this is what the way why which the Python virtual machine is returning to you the attribute error. मतलब डबल अंडरस्कोर के थ्रू इस वेरिएबल को प्राइवेट बनाया गया है पाइथन में, है ना। सिमिलरली इफ आई कॉल दिस मेथड a dot underscore m. So when I run this code, let I take this code at different place, so it will be more clear to everyone. When I run this code, so can you see here, this method is again private because double underscore symbol इसके आगे है। तो यदि मैं लॉजिकली इस फ्लो के थ्रू देखता हूँ, so I am not able to access this private variable. Definitely, I am not able to access this private method. Let I try to have or define one method that is suppose Rahul here self. Simply I am trying to self dot underscore m. I run this code and here I am calling e dot Rahul. तो कैन यू सी आई एम ट्राइंग टू बी विद अ प्राइवेट। सो क्या हुआ, इस प्राइवेट मेथड को मैंने विद इन द क्लास कॉल किया सेल्फ के थ्रू, इट्स वर्किंग फाइन। बट ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू यदि मैंने इसको एक्सेस करने की कोशिश करी थी, तो आप देख रहे थे कि दिस मेथड इज नॉट वर्किंग परफेक्टली एंड वी आर हैविंग द एट्रीब्यूट एरर। सो बाय डबल अंडरस्कोर प्रीफिक्स with the variable or the method you are having the private, but this is not that working perfectly. It's actually a symbolic nature to have the protected, and this you can see this is for the public way. लेकिन क्या पाइथन में एक्चुअली सब कुछ जो प्राइवेट है वो प्राइवेट है, क्या हम उसको एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सो लेट आई प्रिंट अ dir ऑफ a क्लास। जब मैं इसको क्लास ए के dir करने की कोशिश करता हूं, तो आप एक चीज देखिए, द मेथड दैट इज अ प्राइवेट इज डिफाइंड विद द अंडरस्कोर a underscore m. So with this, what I can understood, anything which is private inside this Python that is declared as a private in the class definition. So what is here? It is simply nothing. It is stored inside this dir in the form of the information with the Python virtual machine. वो किस तरीके से स्टोर हुआ है? It is underscore and it's a class name. Then underscore, it's a method or variable. You can see here, this method is underscore a underscore m. Let me check for the variable that is a private variable. What is that private variable here? Underscore x. And one x is the public variable also. No. So for this a, just a minute, I have to restart first. Okay, so when I run this code again, so you can see we are printing for the class. That is what the reason we are having the static variable here only. If I talk about the dir of the dictionary information for the object, so let me comment it first. मेथड क्लास लेवल पर दिखना थी हमारे लिए, इसलिए वो दिख गई प्राइवेट, है ना। लेट आई प्रिंट e dot underscore dict that we have discussed in the previous video. When I run this code, can you see y is 30? In the code you can see it's a public data. Underscore z is the protected data, but it's working like a same like public variable here. Now you can see for the private, this for corresponding this particular very object reference क्या हुआ है, ये इस तरीके से stored है। तो क्या मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं यदि मैं इस वेरिएबल की इस डिक्शनरी की की को लेता हूं? तो सपोज आई एम टेकिंग अ सिंपली a डॉट
underscore capital A underscore underscore X. When I run this code, so can you see the output is 50? So this Python is taking this private data, it is storing in a different way only. So it is giving the different naming convention to the key. But somehow, if we are following this naming convention, so by the object reference, we are able to access this. So this is completely violating the concept of the private nature. So here I can say that there is nothing private. Everything is looking like a public when I can access this private data also. These are the public, private, and protected nature in the Python. We have discussed about the variable as well as about the method. So be aware about when you're using these underscore symbols with your variables in the method. The thing should be very clear to everyone. I hope this is all from my side for this video. Thank you.